My name is Shiva Mohan. My name is Shiva Mohan, and I'm an investigator and researcher at Parapsychology and Investigation Research Society. Today is क्रिसकॉस द ऑनलाइन इवेंट ऑफ स्केयरकॉन. आज आप लोग सबको every each and every one of you must be knowing that this event is so big. It's Halloween nearby, so we are gonna celebrate this Halloween with three more paranormal investigators, three best paranormal investigators of India. That is Dr. Rahul Kumar, Arun Kumar, and CK Bist. Welcome, everyone. How are you guys? Thank you, Shiva. Thank you for this opportunity. We are great. I'm doing good. Hi, Arun. Hello How are everyone. you? Hello Shiva. I'm good. How are you? I'm great. How are you doing? I'm good. Hi, CK. Hello. I think the third investigator has not joined us till now. So let's talk more about Dr. Rahul Kumar. Sorry, not Mr. Dr. Rahul Kumar and Arun Kumar. So, how was your? Please, first of all, please introduce yourself. What are your works? What have you done in this field? Just a small introduction to our viewers. Rahul, please go ahead. Yeah, sure. So, I have been into this field from past 10, 12 years now. So, my journey started when I was back in my medical college doing my degree course. And that is when there were some events that happened. It was a Halloween night, similar to today. And we did something on that night just as a joke, thinking that, okay, let's try something new. And then the events that unfolded after that night changed a scientific student like me, who is a medico, into a believer. So believe me, in my home, most of them are from the field of aeronautics, engineering, medical, and hardly there are anyone who is a believer. Everyone goes by the ethics of science, right? And most of the people ask me this question, you being a doctor, how do you believe in such thing? But as I told you, there was an event in my life which changed the perspective from a non-believer to a believer. And that is when I started a small group in Bengaluru, Karnataka, and slowly and gradually we spread across South India. And I was glad that I joined Indian Paranormal Society later. And right now, we also work as a arm of Indian Paranormal Society in Karnataka, Bangalore. Great. That's an amazing introduction. A lengthy one, but a very interesting one. So, Arun Kumar, how was your journey, or how was your entry into this field of paranormal? Yep. It was great introduction by Rahul, and thanks Shiva. So I'm a consultant right now. So to be frank, my whole family is scared for being me for whatever I do now. So it's a big story, like how I got into this. Okay. If people ask me like, Arun, why did you get into this? Like, do you have any family people, someone who's into these things and all? I said, no, definitely not. But that one incident in my family, got me interested, like to find out what it is. So like families will have clashes and relations and all. So sometimes that bad times happens and they try to do something bad for others. Mhm. So those days people used to say, my family people used to say, Arun, don't touch that. If you touch that, something bad will happen. Don't go near these people, don't be with these people. I like, what is this? No, that's something called as black magic. Don't do that. So they do, and you should not go near them. Mhm. And whatever they, so there's some, no, sometimes they should do, there'll be some lemons or something. They're like, don't touch that. Something will Mhm. happen. But they never told me like, what is that? What will happen? Why we should not touch that? I was a kid and I was not aware like, okay, there is something like this. And going forward, and that was one day I saw Dr. Rahul on television, and I was interested. Okay, there is something people study in this thing. It is they have a scientific approach for this to understand what exactly is happening over here. So that is when I got interested and I considered Dr. Rahul. Then he explained me. I just saw all his works and I was
Pretty much very excited. Okay, there is a person who can guide me in understanding what exactly is this in depth. So that is where I got into the Rahul's team, and it's been almost like, from 2014-15 I'm with Rahul. It's been a great journey with all the real-time experience, and it was quite a journey. It was. Every time we go on our investigations, like, we all enjoy it. We Hmm. learn something new every day. We go there. It was Yes, a great journey. nice. So finally, CK Bist has joined us, one of the wing members of the paranormal investigation investigators. Hi, CK, how are you? I'm just fine, and I'm just traveling to some haunted location as well. And it's very interesting to be the part of pairs from the beginning of the pairs. I was in the pairs, and I am in Yes, the pairs, and I will always in the pair. yes, yes, And yes. this is the best part, that we are organizing the biggest convention everywhere, and joining the renowned paranormal investigators is also honor for me. And it's quite good that we are the part of awareness program, that we are people awareing the people about the myths and the things that the people don't believe in. Mhm. Great. Also, I must also tell all the viewers that CK Bist is also a state representative of Parapsychology and Investigation Research Society. Yes. So let's begin with the Ghost Encounters panel. So the first question that came across my mind when I got to know that I was moderating a investigators panel. So, which is the best case that you have come across, Rahul? Okay. So, to begin with, it was again in Karnataka. I will talk only about Karnataka because that is where majorly we have been working. Mhm. Uh, I will take the incidents of Chief Minister of Karnataka, the last Chief Minister, not the current one. Mhm. So, the Chief Minister of Karnataka resides in his official residence known as Anugraha. And if you go by the history, like the history of 15, 20 years in Karnataka, none of the CM were able to complete their tenure who were residing in Anugraha. So finally, what happened 2, 3 years back? They said that we do not want to stay in this because they termed that house as haunted or cursed. Okay. That is when our team were called to investigate because the opposition party, they started telling that okay, CM cannot do his job, that is why they are claiming that it is haunted, or maybe there is something in the house. Mm. So I still remember that windy night, that night of December, when somewhere around 11ish, I got a call Mhm. from one of the reporters of local media, and they told me that the CM house is investigate has like called you as well as us to investigate his house on live camera to show that there is something. Okay. First, I thought that okay, political parties and all. I was thinking, I was into double thoughts whether I should go or not, because if you say that the house is haunted, there will be many questions from opposition party even targeting you. Very And true. if you do not say that there is nothing, then the history that has been going on from, I guess, around 5 to 6 chief ministers didn't complete their term because they were residing in Anugraha. Then you are again telling something which is there in people's mind that Anugraha is haunted or maybe cursed. Hmm. But still, we decided that okay, let's go, let's do a receipt, and we will do an initial investigation. So I will tell you the difference between an initial investigation and a major main investigation. Sure. So for initial investigations, we just go, we record things, and we talk with the people who are present in that area. We take down readings and we try to assess, is the story real or not? That is when Mhm. we set up a second investigation, which is a detailed one, wherein we bring heavy gadgets, different kinds of gadgets, and we do this investigation. But surprisingly, you won't believe, on TV, on air, this has been recorded. Finally, that video was deleted because of pressure. So that media house, but we still have that video.
On camera, we have seen there were readings, there were things happening nearby, which literally amazed people that things can happen like that. And finally, we were not granted the second permission for investigation, wherein we asked that can we stay in that house one night and investigate whatever we want to. So that was not given because I guess in the first initial investigation, the police, the beat police, which was there, the security guards of CM's house, and the workers who worked there got so frightened that there were two panel discussions that happened post this investigation in Kannada as well as in English. And finally, I guess as of now, nobody stays in Anugrah. Oh, so nobody's residing over there now. No. So people, so whoever becomes the chief minister, they are being given a separate bungalow. So Anugraha remains standstill without any occupancy because of all these myths or reality, which we don't know unless and until we do an investigation. But that night was something which was very amazing. And that will remain in my mind forever because it was on live camera in front of police personnel, security guards, and the people who resided. That's great. That's actually this is one of the horror stories or one of the paranormal incidents that I have never come across. I have never come across this, but it's really like if it's going towards the power of the politician, then we must all know how Right. paranormal activities work. Yeah. So Arun, what was the best investigation that you came across? Yes, Shiva. So one of such incident is it was a sudden call, and I was surprised. No, I just saw in news that day, and I just saw that there are like 30 people, 40 people were traveling in a small bus, and that bus fell into a canal, and almost like 30 people were dead inside that bus. Oh God. I was in office that day, and I just saw the news, and I was quite bad. And after a few days, is what we got a call from Rahul saying that yeah, we have one of the call from the news channels, and says like we'll have to go to that location, we'll have to investigate. So it was quite interesting. Like it was a sudden, like no one knew that I'll just board the bus and I'll go and I'll be dead in next 5-10 minutes. No one even expected because that bus goes around like 5 to 10 times in the same road than the particular town. Okay. So okay, we decided we went to the office and same day like there were many things, there were many things which are stopping us from going there. Hmm. One of such things is on the same day, and there was poisoning in the temple. In the prasad, there was some poison, and all the reporters were in that particular temple. Oh, okay. And we reached at the office, and they said, "So let's take it another day because today no reporters are not there." Hmm. We were like, "No, like we are quite occupied, and even if it's late, we don't mind, and we'll start doing it." We Hmm. went, and on the way, we realized, okay, camera was also exchanged. Again, we came back to the city. Again, we got our camera, we went back, and we reached the place where the bus was right next to the police station. Okay. People were very scared, people were very scared even to go near the bus also. It was Mhm. parked in an open place in the ground, and people are very scared because someone says and 30 people were dead right inside that bus, and no one dares to go near the bus. Very true. And we just went there. It was around 12 or 11:30, 12. It was around 11:30, 12, and we reached there. We could not see a single dog around it, but only what we can hear is barking. Oh God. We went Okay. around. It was too dark. It is called a Sante Maidana. It's like a place where the play, so weekly they all the sellers, vendors come there and they sell their products. But Mhm. that moment after they parked that bus, right next to there's a police station. No one even dared to come and ask what is going on there. People are that scared to go near the bus. And we went there, and that's what we realized. So the first thing we realized is what's happening. Like no one is there, but from where is the dog barking? Nothing. Not one single dog came near us, but it was just barking. Mhm. Then we just made initial readings, and we took our base readings, and it was fine. Then we got a list of people, like people who were dead in that inside that bus, and we just saw it was mostly like around 6 to 7
male people were there and around 11 female were there, and rest of the people were kids. It was school when they were coming heading back from the school. It just went into the water. It went into the canal. It was quite surprising for us, and we really felt bad. And even the reporters were really scared to go right near the bus. When we went, that surrounding area it was chill, and they were scared. Or the first note, they were scared. And we were like, right, let's talk. Only then we'll get to know what is here. Yeah. And people claim that dogs will see that particular bus and they'll start barking, is what they claimed. That's people who live by and the shops which is nearby, what they claimed is dog will just see the bus, they'll start barking. So that was the thing, and people were really scared, and we started our base readings, and it was quite surprising. Usually when we go, suddenly we won't get. We spend hours of communicating. That's when we get. But when we started doing itself, we were getting readings in our devices, and we were quite surprised. Like, yes, we should do it. And we investigated that place, and then we went to the place where accident happened. That's where accident happened. They did postmortem of those bodies there itself, the place where accident happened. Around 30 people, they did postmortem over there, and they burnt all those cloth or whatever they used for this postmortem. They burnt it right over there. Even that ashes were right over there. Oh God. And we went near the canal. We started investigating that place. You will never believe. It didn't take much time for us. Trust me, to get the readings, and it was responding. It's like someone you go and who's looking for help. If you go and ask, yes, I'm here. Sorry to They start interrupt you responding. guys. Yeah, I'm here. Please help me out. Hi. Sorry, Arun, to interrupt. Shiva, we have CK Bish with us. So Yeah. Is there, yeah? You're aware, na? Yeah. I'm aware. Yeah. Cool. We had to talk to. And also, actually, थोड़ा सा हिंदी भी कर लेते हैं, वरना हमारे YouTube का चैनल में आके करेंगे. हिंदी में क्यों बात नहीं करते हो? आ जाएगा, कमेंट तो आ जाएगा सर, 100% तो शिवा तो इंग्लिश हिंदी में क्यों इंग्लिश बात थोड़ा कर मिला रहा के कर लेते हैं बात. है. जरूर. चलो, continue guys. Yeah, Arun. So when you go and ask the person like who's in need of help, if you go and say I'm here, that's when they start responding, right? It was that situation over there. When we went and we just start asking, we just called their name and they start responding. Okay. Only when we call that particular name, they was responding. When someone called, there's a person called Ram, and you call Ram, I'm here. Like, yes, I'm here. Please, no one is talking to me. Please communicate. It was like that. Oh God. Okay. It was one of the very interesting investigation which I was part of. Now stream. It was amazing. I cannot forget that particular day. That's baffling. CK जी, आप बताइए आपका बेस्ट इन्वेस्टिगेशन. आप तो बहुत सारे, कितने सारे, आपका तो YouTube पे वीडियोस खत्म ही नहीं होते हैं. हॉन्टेड लोकेशंस आपके खत्म ही नहीं होते हैं. आपका सबसे बेस्ट वाला एक इन्वेस्टिगेशन बता दो. आपका बेस्ट वाला एक इन्वेस्टिगेशन बता दो मुझे अपने सारे व्यूअर्स के लिए. More than I think 120 investigations on my channel, and I don't think it would be fair to select some investigation part to be the best part, because there are so different moments and different memories. You can say कि मतलब कई तरह के emotions, कई तरह की places, मतलब differentiate करना बहुत मुश्किल है उन सब चीजों के बीच में कि कौन सी बेस्ट है. बट स्टिल मतलब एक डिफरेंट यूनिक अगर हम कहेंगे किसी चीज को, तो मेरा बेस्ट पार्ट सबसे बेस्ट पार्ट आज तक का लाइफ में रहा है टू इन्वेस्टिगेट द पॉजिटिव. कभी भी मैंने देखा है कि इन्वेस्टिगेटर्स जाते हैं नेगेटिव जो स्पिरिट्स होती हैं या जो भी प्लेस होती है, लाइक ईएमएफ कैप्चर करना बहुत इजी होता है. लाइक ईएमएफ हमको मिल जाता है. देयर आर वेरियस रीजन फॉर ईएमएफ. ठीक है, तो जनरली मतलब जो है हम इसको जनरल मानते हैं कि ईएमएफ आना. बट माय एपिसोड was with India TV for the Nidhi one, and we were investigating the Nidhi one for the activity that happens after 6 o'clock in the evening. The activity happens that is called Ras Leela, and the Lord Krishna comes and tastes the prasad and Shringar and does a complete Shringar. तो ये सब कहानी थी जो भी वहाँ की. तो जब मुझे इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने का मौका मिला, और द सेम प्लेस, सेम मोमेंट और सेम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हो कि आप अगर आसपास के सराउंडिंग में सेम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, देन देयर शुड बी नो रीजन फॉर फ्लक्चुएशन ऑफ ईएमएफ. एग्जैक्टली.
continuously Wow. for seconds, and it just disappeared from the moment, and that was my best part to investigate the positive. मतलब Hmm. कभी आप जिंदगी में कभी सोचे कि हमने पॉजिटिव को भी रिकॉर्ड किया है, तो ये Okay. बेस्ट मोमेंट होता है लाइफ का. मतलब इसमें ऐसा कुछ था नहीं कि मैं कुछ बताऊं इसमें डिटेल में, बट ये बेस्ट पार्ट है लाइफ का कि आपने एक्चुअल में पॉजिटिव को फील किया अपने सर. मतलब आपके जो अंदर वाइब्स हैं वो कंप्लीटली एकदम से उस टाइम से चेंज हो जाती हैं जब आप ईएमएफ वहां पे देखते हो कि इस पॉजिटिव प्लेस में इफेक्ट कैसे आ गया. नेगेटिव में तो हम सोचते हैं कि कोई ना कोई स्पिरिट मौजूद है, कोई ना कोई एनर्जी है, कुछ ना कुछ यहाँ पे हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है. सडनली जब चरण पादुकाएं हैं कृष्ण भगवान की वहां पे और पूरे ओवरऑल एरिया में कहीं भी ईएमएफ नहीं है, एंड सडनली व्हेन वी टच दैट चरण पादुकाएं विद आवर ईएमएफ मीटर, गॉस मीटर, सो इट स्पाइक्स अप टू 5 मिलीगॉस सडनली एंड देन कम्स बैक. और जब हमने जो उनका जो विश्राम वाला ग्रह था वहां पे जब मैंने पूरी वॉल में घुमाया तो एक बार नहीं आया. दूसरी बार जब मैंने घुमाया तो ईएमएफ मीटर मतलब पूरा रोटेट किया उस जगह पे, तो एक जगह आके वो ऐसे स्पाइक्स लेने लगा लाइक ही वाज समवन वाज टेलिंग दैट आई एम हियर, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, आई एम हियर. तो ये लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है जिसे हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेट द पॉजिटिव. एंड आई एम जस्ट ट्राइंग सम मोर इन्वेस्टिगेशन विद द पॉजिटिव एज वेल, और कोशिश करूंगा कि मैं अपने यूट्यूब चैनल का पेयर रहूं और ज्यादा ज्यादा इन्वेस्टिगेशन दे सकूं. बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन ऐसे हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो मेरे बेस्ट थे, जहाँ पे मतलब कई तरह की स्पिरिट्स को फेस किया है. बट एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगा, इसमें कभी मैंने नेगेटिव स्पिरिट कह सकते हो आप, लेकिन कभी मैंने किसी स्पिरिट को हॉन्टेड जो कि कहते हैं अटैकिंग स्पिरिट को, मेरे ख्याल से मैंने कभी फेस नहीं किया. सराउंडेड बाय स्पिरिट इज कॉमन, बट अटैकिंग बाय स्पिरिट इज नॉट कॉमन फॉर मी. मतलब कभी हुआ नहीं आज तक. So these both are a different part of investigation, जो कि मेरे best part रही है. Nothing harm yet. Like. Nice, great, good. A very positive side of investigation, right? जब अभी ठीक है, अभी हम लोग टॉपिक तो निकाल दिया है डिवाइसेस का, तो सारे इन्वेस्टिगेटर्स को मैं पूछ लूं, व्हाट आर द डिवाइसेस यू गाइस यूज ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन? सीके, आपसे चालू करता हूं मैं अभी. जनरली आई यूज पेयर्स. अपना स्पिरिट बॉक्स जो है हमारा पेयर तो सबसे फेमस है इस चीज में. कम्युनिकेशन में मुझे लगभग जनरली आप कह सकते हो कि मैं ऐसी प्लेसेस पे गया हूँ जहाँ मुझे लाइक ब्लैंक, आई एम जस्ट ब्लैंक अबाउट दैट प्लेस. उन्होंने बोला कि यहाँ एक्टिविटी आप जाओ, एंड सडनली आफ्टर 1 आवर उनको कोई स्टोरी बताता हूँ, वो कहते हैं यस यही नाम था और यही यहाँ पे एक्सपायर हुए हैं और ये इतने साल पहले एक्सपायर हुए हैं और ये रीजन रहा है एक्सपायर होने का, वो सब मैं उन्हें बताता हूँ. तो वो बोलते हैं या यू आर राइट. और जनरली मैं पेयर का स्पिरिट बॉक्स हो गया, अपना गॉस मीटर है, अपना जियो थर्मोफोन है, अपना थर्मो सेंसर है, और अपना मोशन सेंसर है, और ईवीपी रिकॉर्डर है. जनरली मैं इनका यूज करता हूँ. नाइट विजन कैमरे का यूज करता हूँ जनरली. कभी कभी मुझे जिस जगह पे लगता है कि दिस प्लेस शुड बी केप्ट क्वाइट इन द पीस एंड we should investigate silently, then I'd use night vision generally at that time. Okay. And what is the weapon of CK Beast? CK Beast का सबसे डिवाइस कौन सा है कि हमेशा आपके हाथ में रहेगा ही, या फिर ये डिवाइस ये मेरा है, ट्रेडमार्क कर दो इसको मेरा नाम का, ऐसा कौन सा डिवाइस है आपका? We can say gauss meter is perfectly suitable for me because generally I start all the investigation from the gauss meter. Because if EMF is not present, then there is no reason of investigate further. But there are scientific reasons that EMF can be fluctuated or can come in starting or in the ending part as well. But still, the EMF is my first device that I use for investigation. तो मेरे हिसाब से तो मेरा मतलब जो सबसे बड़ा साथी है वो हमेशा EMF रहता है, और मेरे ख्याल से अभी भी मेरे साथ में पड़ा हुआ है. तो मैं लाइव देख लो. For all the viewers, ये है. ठीक है, बेस्ट जी जरा बताइए. This is a gauss meter which measures around 0 to 10 milligauss of electromagnetic fluctuation, and this is perfect for our investigations to start with. For starting, मतलब beginner level पे जब अभी आप start करते हो किसी place को, to check the energy, to check the prevalence of energy, तो जनरली मेरा सबसे बेस्ट पार्ट यही है. तो मुझे यहीं से मालूम चलता है कि मुझे क्या करना है आगे. और बाकी आपको बताइए कि जो अपना मेंटल साइकोलॉजिकल हमारा जो एक वे होता है वहां पे जाके कम्युनिकेट करने का, लाइक साइकिक तौर पे, वो एक अलग चीज. हाँ,
साइकिक एबिलिटी जिसे कहते हैं, वो एक अलग चीज है, बट हम अपने व्यूअर्स को कोशिश करते हैं कि हम साइंटिफिक तौर पे बताएं और Sure, उन्हें sure. दिखाएं जो हम फील कर रहे हैं, उन फीलिंग्स को थोड़ा डिफरेंट रखते हैं, थोड़ा सा उनको साइलेंट रखते हैं ताकि वो पब्लिक को ना बताएं। हम साइकिक कुछ प्रूव कर रहे हैं तो विद एविडेंस प्रूव कर सकें। सो Sure. दिस इज द बैक पार्ट। Okay. Arun ji, आप बताइए, what is your weapon and what are the devices you use while going for an investigation? If you ask me, the best favorite gadget is K2 for me. K2 and Gauss is also. You should not confuse people, you know. I prefer take one, talk to them, get familiarized with the device. Yeah, this is what I'm using to communicate with you guys. And we use motion sensor, and we use laser grid, we use Gauss meter, we have K2, and that's what we take like how the last one described, and it was same. Like it was quite interesting. But my favorite gadget, if you ask, it's always a K2. K2. I always got a perfect recording. Whenever I ask, I got no, that recording for that particular question. I shoot and I get the response in that. It's one of the whenever I go, and I'll tell Rahul like I'll take this K2. K2. So that's the favorite gadget I get. Great. And Rahul, what are the devices you use and what's this doctor's weapon? Okay. So most of the devices तो CK ने भी बता दिए, अरुण ने भी बता ही दिया. So these are the general devices जो most of the investigators around the world use करते हैं. But मेरे साथ एक थोड़ा सा issue है. I will say that it is my personal gadget. मैं जब on field होता हूँ ना, तो I am an open-minded person, but मैं थोड़ा सा critic भी रहता हूँ, जो कि मेरी टीम को शायद पसंद नहीं होता. मेरा क्या है, जो आपने पूछा कि आपकी गैजेट क्या है, मेरी गैजेट है किसी भी चीज को पहले रैशनली बताना. अब मैंने क्या देखा है, बहुत बार होता है कि हमें ईएमएफ पे डिफ्लेक्शंस मिलते हैं, हमारी आईआर जो थर्मोमीटर्स हैं उसकी रीडिंग कभी कभी ऊपर नीचे जाती है. बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि हमने जो आईआर टॉर्च लगाए हैं, मोशन डिवाइसेस लगाए हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं. ठीक है. अब मैंने ये भी नोटिस किया है, जैसे आप अगर मीडिया के साथ, आप न्यूज चैनल्स के साथ है, उनका ड्यूटी होता है कि बोलना अरे अरे कुछ दिखा, वहां कुछ है. मैं बोलता हूँ वहां कुछ भी नहीं है, आपको कैसे पता वहां कुछ है? ये दूसरी बार होना चाहिए. दिस शुड हैपन सेकंड टाइम एज वेल. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल आपने ट्राइफील्ड मीटर यूज किया, गॉस मीटर यूज किया ईएमएफ के लिए, आप लोअर अर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आप देख रहे हैं कि कहीं कोई डिफ्लेक्शन डेविएशंस है कि नहीं, राइट? मैं पहले ये चेक करता हूं कि क्या हमारे पास जितनी गैजेट्स हैं उससे कहीं कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लीक तो नहीं. चांसेस हैं, अगर फ्लक्चुएशंस आपके पास आ रहे हैं, आपके अपने डिवाइसेस से आ सकते हैं. आपके ऊपर से हाई टेंशन वायर रन करता है मोस्टली इन द फील्ड्स, इन द विलेजेस. बहुत सारे हाई टेंशन वायर को ऐसे ही लोकेशन से ले जाया जाता है. उसकी भी रेंज इतनी होती है कि आपके आराम से डिवाइस में कैच हो जाए. या आप ऐसी जगह हैं जहां पे कोई सब स्टेशन है, जहां पे कोई ट्रांसफार्मर है, आपका डिवाइस एकदम 10 मिलीगॉस शो करेगा. These are the things. तो इसीलिए मैं जब इन्वेस्टिगेशन करता हूं, मेरे इन्वेस्टिगेशन का एक ऐसा रूल होता है कि हम इसे दो सेपरेट इसमें डिवाइड करते हैं. फर्स्ट जो होता है वो होता है ग्राउंड चेक. हम सारे डिवाइसेस के साथ, जो अभी अरुण बता रहे थे, बेस रीडिंग लेते हैं. अगर हमें पता है कि यहाँ का एबनॉर्मल ईएमएफ, कुछ लोग कहते हैं कि 6-7 मिलीगॉस जाता है, तो हम वो चेक करते हैं. अगर मेरे को 1 और 2 मिलीगॉस शो कर रहा है कंटिन्यूअसली फॉर मे बी हाफ एन आवर, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ का जो बेस रीडिंग है वो 1 और 2 मिलीगॉस है. लेकिन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अगर मुझे उसमें जंप दिखता है 6 और 7 मिलीगॉस का, इसका मतलब देयर इज समथिंग, कहीं से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्ज आया. अब हमें ये पता लगाना है ये आया कहाँ से. इज इट नेचुरल कॉज और इट इज एन एबनॉर्मल और पैरानॉर्मल कॉज? कौन सी कॉज है? इसी चीज को हम सारे इन्वेस्टिगेटर्स या रिसर्चर्स रिसर्च कहते हैं. आप रिसर्च या इन्वेस्टिगेटर तभी हैं जब आप किसी चीज को एक्चुअल में इन्वेस्टिगेट करते हैं, आप खोज के निकालते हैं कि ये हो क्यों रहा है, या आप रिसर्च करते हैं कि क्या साइंटिफिकली पॉसिबल है इसको रिक्रिएट करना. अगर आप साइंटिफिकली इसको रिक्रिएट कर सकते हैं, देन दैट इवेंट इज नॉट पैरानॉर्मल. करेक्ट? इसीलिए मेरा पर्सनल गैजेट, दीज आर ऑल बेसिक गैजेट्स जो हम यूज करते हैं. यस, ये सारे इन्वेस्टिगेटर्स यूज करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली आपको रीडिंग्स चाहिए, राइट? लेकिन इन सब गैजेट्स के आगे जो सबसे बड़ी चीज आती है वो आती है एक रैशनल थिंकिंग.
कि अगर आप बैठे हो कहीं पे और ग्लास गिर गया, दिस डजंट मीन दैट देयर इज अ पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी। ये भी हो सकता है कि कहीं धक्का लगा या हवा आई और वो ग्लास गिर गया, राइट? दैट्स अ पॉसिबिलिटी। Yes, yes, yes. दिस इज व्हाट आई डू। Great. So rational thinking and rational vision Approach. towards, yeah, rational approach towards the investigation या फिर towards the case is your weapon, your gadget. तो हम लोग अभी गैजेट्स के बारे में तो बात कर लिया, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ना हमेशा क्वेश्चन हमेशा यही आता है कि ठीक है, आप लोग गैजेट्स यूज करते हो, आप इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करते हो, इन्वेस्टिगेशन से पहले और इन्वेस्टिगेशन के बाद में क्या होता है ये व्यूअर्स को नहीं पता, बिकॉज हम लोग जब भी व्हेन वी एज एन इन्वेस्टिगेटर्स जब भी हम वीडियो निकालते हैं, व्हेनेवर वी आर बीइंग रिकॉर्डेड, वी आर रिकॉर्डिंग थिंग्स, इट्स ऑलवेज द इन्वेस्टिगेशन, इट्स नथिंग बिफोर दैट और नथिंग आफ्टर दैट. So what happens before and after an investigation, or how do you prepare yourself before and after? मतलब जाने से पहले, एक इन्वेस्टिगेशन में जाने से पहले आप मेंटली हो, फिजिकली हो, कैसे प्रिपेयर होते हो, या और इन्वेस्टिगेशन के बाद हाउ डू यू क्लेंज योरसेल्फ, और या फिर क्या करते हो आप? सो राहुल जी. ठीक है, तो मैं अपने सारे व्यूअर्स को सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि एक इन्वेस्टिगेशन का जो कंप्लीट प्रोसीजर होता है, अगर आपको वो जानना है तो द बेस्ट प्लेस टू सी दैट इज पेयर्स। आप पेयर्स की यूट्यूब चैनल पे जाएं, क्योंकि उन्होंने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हर इन्वेस्टिगेशन को कवर किया है। फर्स्ट थिंग इज अ डिस्कशन। आप हिस्ट्री डिस्कस करते हो, आपको कोई केस आती है, आप यू डू नॉट डायरेक्टली जंप ऑन कि चलो इन्वेस्टिगेट करना है। आप पहले अपने टीम के साथ, अपने मेंबर्स के साथ यू डिस्कस कि वो केस क्या है, वहां पे क्या क्या चीजें लोग बता रहे हैं, क्या हो रहा है। देन यू गो, यू सेटअप डिवाइसेस, आप रीसी करते हो, आप ग्राउंड चेक करते हो, सारा कुछ करते हो। इन्वेस्टिगेशन में जो भी एविडेंसेस आपने कैप्चर किए, उसके बाद अगेन आपकी एक फाइनल डिस्कशन होती है जो कि एनालिसिस होती है, द एनालिसिस पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। बहुत जगह क्या होता है, आप आजकल यूट्यूब चैनल्स पे इन्वेस्टिगेशन और ये सारी चीजें बहुत बढ़ गई हैं, राइट? आप देखोगे मैक्सिमम लोग सिर्फ इन्वेस्टिगेशन पार्ट दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता, ये सारे लोग जो हैं ये गूगल से पढ़ के, या किसी को शौक है ये करने का, तो दे डू इट, वो लर्न कर लेते हैं ऑनलाइन एंड दे बाय द गैजेट्स एंड दे जस्ट गो एंड इन्वेस्टिगेट, बट दे डोंट नो द लॉजिक बिहाइंड। ये कंप्लीट रिसर्च या कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन तभी माना जाएगा जब आपने पूरा आइडेंटिफिकेशन किया है ऑफ द केस, you have collected your evidences, and then you analyze those evidences to come on a conclusion। आप किसी भी, कोई भी जो आपके यहाँ केस आती है, इंडिया में भी या कहीं पे भी, केस का क्लोजर कब होता है? when you give a closure report। आप एक जगह चले गए, you went to a haunted house, haunted location, आपने इन्वेस्टिगेशन कर ली, आपने सबको दिखा दिया, रीडिंग्स मिला, मेरी बात भी हुई, सब कुछ हुआ, but there is no closure report to it। what does we think? is that place really haunted, या लोगों का वहम है, या फिर ऐसे ही कोई मनगढ़ंत कहानी है? unless and until you give a final closure, तब तक complete investigation process नहीं होता है। and हर investigation process is divided into these three major classifications: pre-investigation checks, investigations, and analysis and reporting। ये तीन चीजें हैं। Nice, perfect. Arun ji, what is your way of preparing yourself before an investigation, and what do you do post an investigation? The first thing is we always follow what Rahul just mentioned right before now. So what I believe is first we should be in control. We should know what we are first and what we are going to find. And whenever we get some case, and we should know about that particular place. It's not just random. Someone says, "Yeah, this thing. Hey, pick up the device, go and do it." No, we should follow certain rules and regulations. We always follow. We should know about the place. First thing is when someone says, "Okay, I'm feeling something like this. This place is not good. I don't know what's happening in this place. I mean, what is that place? What is the history of that place? What are the issues you have been in that particular place? Is what we'll have to know before jumping into the conclusion or investigating. Before investigation, we should know what is that actually happening over there. Yeah, like just because we get random reading on the devices, we cannot say that yes, there is a spirit or there's a ghost. We should never do that. That can be anything, like any electronic devices, anything around us, right tension wire, anything. It can be anything that's giving the readings. So never jump into conclusion. That's the reason we always
try to reproduce whatever the results we got it. Only then we'll analyze it. Okay, what is actually happening? What is that we did it? After knowing the particular days, when we take our base readings and again we recreate that particular situation again, and we tend to analyze like what exactly is happening over there. Okay. Yes, when as I said, yes, closure is very much important. What do we say to that person who called us and asked us what is happening around me? I just want to know. Exactly. We should be in a state to explain them this is what is going on. Before starting investigation, we should know what is happening. During investigation, also we should know what's happening. After investigating, after analyzing, we should tell people what was happening around them. Okay. Great. सीके बिस्ट अटक गए नहीं. सीके बिस्ट जी बताइए, आप क्या करते हो एक इन्वेस्टिगेशन में, एक हॉन्टेड प्लेस में जाने से पहले आप क्या खुद को कैसे प्रिपेयर करते हो, और उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन हो गया उसके बाद आप क्या करते हो? हाउ डू यू, व्हाट डू यू डू? जनरली हम क्या करते हैं, लाइक जैसे कि मेरे पास में कोई स्टोरी आती है कि ये प्लेस जो है, फलाना प्लेस जो है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ एंड वी आर फेसिंग दीज इश्यूज हियर एंड दिस रोड और दिस बिल्डिंग और दिस प्लेस. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको मतलब कहते हैं कि उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए पहले चेक करता हूँ कि ये सब खाली अफवाहें हैं या फिर कि ये इसमें कुछ कहानियों में सच भी है, या सिर्फ वो तो खैर हमें इन्वेस्टिगेशन दौरान मालूम चल जाता है कि क्या अफवाह क्या नहीं है, बट स्टिल एक ऑथेंटिक तौर पे हमें चेक करना पड़ता है कि 2-3 लोगों के सजेशन लिए, लाइक नियर बाय लोकल जो भी है उस प्लेस के, जिन्होंने ऑब्जर्व करी हो ऐसी एक्टिविटी, मतलब एग्जाम्पल्स लेने पड़ते हैं लोगों के, लाइक उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ, लाइक उनको जानता हूँ कि हाँ सब लोगों के एक्सपीरियंसेस लगभग सेम है या फिर अलग अलग लोगों ने फेस किया, अलग अलग तौर पे या अलग अलग चीजें फेस करी है. उसके बाद मैं अपनी टीम को प्रिपेयर करता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल तो बी रेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द इन्वेस्टिगेशन, कि आप रेस्पेक्टफुल रहें जो भी इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं. और सेकेंड थिंग, नॉट टू बी अफ्रेड while investigation, and if you are still afraid, then keep silent and we will sort out the thing later on, but we have to maintain a discipline during investigation. तो ये सब चीजें हमको पहले ही स्टार्ट करनी पड़ती है. इन्वेस्टिगेशन से पहले, किसी भी लोकेशन में जाने से पहले हमको प्रिपेयर करना पड़ता है. ऑथेंटिसिटी हो गया और टीम को प्रिपेयर करना हो गया, टीम को प्रिपेयर करके रेडी करना हो गया कि आप लोगों को, अगर आप जैसे कि कोई लोकेशन सेफ्टी पर्पज से, लाइक कोई ऐसा इलाका भी हो सकता है जहाँ पे हमें एनिमल का इश्यू हो, लाइक वाइल्ड एनिमल का इश्यू हो, तो हमें उस सब चीजों को सेफ्टी पर्पज से भी प्रिपेयर करना पड़ता है. गैजेट्स को भी प्रिपेयर करना पड़ता है कि ये सब चीजें, गैजेट्स हमें वहाँ, जैसे कि आप किसी ने कहानी बताई है कि यहाँ पे कोई आवाज सुनाई देती है, यहाँ किसी ने कोई स्क्रिप्ट लिखी नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग लाइक डीवीपी रिकॉर्डर हो गया, जियो थर्मल फोन हो गया, और मतलब उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन का प्लान करना पड़ता है कि अब हमें आज यहाँ पे हमें ये वाली चीजें ज्यादा यूज करनी है ताकि हम इस फेनोमेनन को जान सकें कि ये क्या है. ये सब चीजें हमारी इन्वेस्टिगेशन में होती है. डिवाइसेस का सिलेक्शन, टीम को प्रिपेयर करना, ये सब चीजें हो गई. और आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि आप कहते हैं कि कोई डर गया साथ में हमारे गया, मतलब जनरली क्या होता है कि मैं हर किसी को इतना ज्यादा मतलब तैयार रेडी नहीं कर सकता हूँ इन्वेस्टिगेशन के लिए, बट दे आर पीपल टू बी द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, टू बी हेल्पफुल इन कैमरा हैंडलिंग, माइक हैंडलिंग, लाइट हैंडलिंग, तो मुझे लेके जाना पड़ता है लोगों को. तो उनको प्रिपेयर करना, उनको जो मैंने प्रिपेयर किया था उसका क्लींजिंग के लिए, लाइक मैं बोलता हूँ कि आप लाइक मेडिटेशन टेक्निक्स बताता हूँ मैं लोगों को कि आपको मेडिटेशन कैसे करना है और उस चीजों से बाहर कैसे निकलना है. मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि मेरी टीम वाले जो है मतलब डरे हुए होते हैं आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, तो मुझे उनको भी मतलब जो है कंसल्ट करना पड़ता है कि आप इन सब चीजों से कैसे बाहर निकल सकते हो, मेडिटेशन के थ्रू निकल सकते हो, सॉल्ट वाटर बाथ है, मतलब ये सब चीजें क्लेंजिंग की चीजें हैं, ठीक है. और फेयर तो है ही है हमको, जब जिस भी एक ऐसे पॉइंट पे मैं आता हूँ जहाँ मुझे लगता है कि हाँ मुझे कुछ यहाँ इंफॉर्मेशन चाहिए या मुझे यहाँ पे हेल्प चाहिए, देयर इज ऑलवेज पूजा एंड सरबा, जो कि मतलब ऑलवेज रेडी होते हैं, मतलब एक कॉल पे मतलब जो है मुझे सारे आंसर मिल जाते हैं. तो जनरली मुझे आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन जो होता है, ये टीम का ये सब चीज देखनी होती है, और साथ में जो कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन जनरली मैं फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में कभी देखता ही नहीं हूँ किसी को भी, किसी भी प्लेस मैंने कभी कंक्लूड किया ही नहीं, बिकॉज द थिंग्स हैपनिंग दिस डे डजंट हैव
एनर्जी रिपीट करे हर बार, सेम जगह पे सेम चीज रिपीट होती हो डेली, तो ऐसा नहीं होता। तो हम उसको कोशिश करते हैं 2-3 पार्ट में इन्वेस्टिगेट करने की, और चेक करते हैं कि भाई ओवरऑल हमारे पास में क्या कंक्लूजन आ रहा है, तब हम किसी केस का कंक्लूजन करते हैं। तो ये आफ्टर इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा पार्ट होता है, जिसमें कि हमें टाइम लगता है और ट्रैवल भी इसमें बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि हमें अगेन जाना पड़ता है लोकेशन पे चेक करने के लिए, अगेन इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, और कई कबार डिवाइसेस और अपनी स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ती है। लाइक इस टाइम हमने ईएमएफ के थ्रू कोशिश करी थी, अब नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे थर्मोसेंसर के थ्रू या फिर नाइट विजन के थ्रू। ये सब चीजों मतलब आफ्टर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है, तो ये जनरली मेरे साथ में रहता है। ओके, ग्रेट। सो और एक क्वेश्चन है जो हमेशा व्यूअर्स के हमेशा दिस क्वेश्चन इज ऑलवेज देयर, आप लोग सबको आया रहेगा, मैं एम वेरी श्योर अबाउट दिस, कैन वी रियली टॉक टू स्पिरिट्स? अरुण जी। We are here. I have a physical body, and I know the language I'm talking to you right now. Yes. There is something within me. There's in this flesh. There is some energy, and I know the language I'm talking to you. But how do you communicate with someone when there is no physical body over there? We need a means. That's when we use as a. I'm not a psychic, or what I have is only devices with me. Yes. I use that and I communicate. It's not like, in movies they show, okay, there's a lady who's wearing a white dress and coming with, and I say no, that's not at all true. When someone is dead, they don't go for shopping and get a white dress and wear and stand in front of them. Very true, very true. There are people who told me, yeah, I was standing there and there was a person who was wearing a white dress and she was coming near me. Yeah. How will someone, there is no physical body, how can someone come wearing a white dress and just disappear in seconds? Energies are everywhere, but depends on which particular energy you're interested in talking to. Yeah, exactly. You need a media to talk, right? Like I'm talking to you right now, there might be energies around me, but how will I communicate with them unless there is a physical body, or unless there's a means of communication? There should be some means of communication. That's when I'm not psychic, right? I also mentioned I can't directly communicate. I have no such super energy to talk like that. What I make use is devices, and using devices, first we explain them. They might not know like how to use it. Like you just give me some supercomputer, I might not know how to use it. Once having the guide or something, I can use it. That's when we tell this is what we have, this is who I am, and here I'm here to talk to you is what we tell. I'm no one to help them. We never say I'm here to help you. No, I can't help someone while going one and I can come back as a two. We are here to talk. So we need a means of communication. That's when we use the devices. We explain this is what you will have to do it. If you want to say yes, give the response in this way. If you want to say no, give the response in this particular way. And when we ask that particular question and we get the response in similar way as we expect, is what we get come to the conclusion. Yes, there is someone who's trying to reach out to us, who's trying to respond to whatever we are asking them. Yeah, very true. That's what I tell my friends when someone asks, like, how do you do? Hey, can you talk? You have a conversation. This is what I tell people. Yeah, that's very true. The points you have said, it's like very legit. Like white sari nahi hai, white dress nahi hai. It's just a concept that comes along, right? If I'm not wrong. Yeah. So Rahul ji, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि have you ever been, मतलब कभी एक इन्वेस्टिगेशन से या फिर एक केस आपको मिला है, वो आपका इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, you came back and you have been followed or attacked by an entity or a spirit, ऐसा कभी हुआ है? यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन है, होती है ऐसी चीजें, ऐसा नहीं है नहीं होती है, लेकिन अगेन जैसा अरुण ने कहा, बीइंग अटैक्ड, ठीक है, जैसा हम मूवीज में देखते हैं, हम वेब सीरीज में देखते हैं, आप फिजिकल फॉर्म में एनर्जीज को शायद ही देख सकते हैं, इस दुनिया में किसी ने शायद ही देखा इन अ फिजिकल फॉर्म, और अनलेस एंड अनटिल यू आर इन अ फिजिकल फॉर्म यू कैन नॉट हर्ट समवन। हाँ, आप क्या, बिकॉज यू आर एन एनर्जी and human body also has an energy, आप maximum यही कर सकते हो कि you can suck the energy out of a human being so that he becomes most depressed person on that planet
एंड ही माइट डू सम हार्म टू हिम, ये हो सकता है, दैट्स अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि एनर्जीज फीड्स ऑन एनर्जीज, राइट? तो दैट्स अ पॉसिबिलिटी। लेकिन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशंस, जब हम इन्वेस्टिगेशंस जाते हैं तो वी हैव टू सी कि हम अगर 4 गए हैं तो 5 वापस ना आए, एंड दैट हैपेंस मेनी टाइम्स। इसमें क्या होता है, इसमें 2 गलतियां आप इन्वेस्टिगेटर करते हैं। पहला, ये हमें हमारे धर्म ग्रंथों में भी सिखाया गया है, जिसका जैसा है उसको वैसा ही भरना है, और इसी जन्म में भरना है, आगे और कुछ नहीं, ठीक है? तो आप जिंदा हो या मर गए हो, आपने जो किया है आपको इसी जन्म में भर के जाना है। अब हम जिस एनर्जी से बात कर रहे हैं या उनसे कुछ भी कर रहे हैं, बहुत बार होता है कुछ इन्वेस्टिगेटर्स बहुत ज्यादा आगे जाकर के बोल देते हैं हम आपकी मदद करेंगे, हम आपको उस समस्या से निकालेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, बट यू डोंट नो कि व्हाट ही इज गोइंग थ्रू। अब क्या होता है, वो उसके कर्म को तो आपने अपने ऊपर ले लिया, ठीक है, एंड वो आपके साथ लास्ट हो जाता है, बिकॉज ही और शी फील्स कि आप कहीं ना कहीं उसको जो भी मदद करनी है वो आप कर सकते हो। यू वेंट देयर टू इन्वेस्टिगेट, आप गए इन्वेस्टिगेट करने, उस जगह को क्लेंस करने, लेकिन आप हेल्प करने या उसके कर्मों को अपने ऊपर लेने आप नहीं गए। सो बहुत बार होता है कि इफ यू डू नॉट हैव अ साइकिक इन योर टीम, और इफ यू डू नॉट डू क्लेंसिंग, या अपनी रक्षा जो होता है, हम जो अपना एक सुरक्षा कवच बनाते हैं इन्वेस्टिगेशन से पहले, इफ यू डोंट डू दैट, बहुत बार पॉसिबिलिटीज है कि आपने इन्वेस्टिगेशन खत्म कर दी और वो साथ ही साथ आपके पीछे पीछे आया। हमारे साथ एक हुआ है, वी हैव डन वन इन्वेस्टिगेशन जिसमें ऐसा हुआ था। इट इज अ फोर्ट जो बैंगलोर से अराउंड 150 किलोमीटर बाहर है, इन द एक्सटीरियर्स ऑफ बैंगलोर। और वो फोर्ट ऐसा है कि वो स्ट्रैटेजिक फोर्ट है, मतलब वो फोर्ट इज ऑन अ हिल टॉप, और उस तक पहुंचने के लिए देयर आर 4 सेपरेट गेट्स, ठीक है, एंड हर गेट, मतलब पहली बात तो उस फोर्ट की चढ़ाई इज 80 डिग्री क्लाइंब, सो आपको अपने हाथ पैर सब लगा के चढ़ने होंगे, और यू शुड यूज अ रोप, ठीक है, पहला वो। दूसरा, उसकी डिफिकल्टी जो है बहुत ज्यादा है, तो जनरल नॉर्मल ट्रेकर्स नहीं जाते हैं, ठीक है। आप जब उस पर ट्रैक करते हो तो आपको वो चारों गेट क्रॉस करने के लिए बहुत सारी डिफिकल्टीज है। On top of that, it's the only, I think in Karnataka, I'm not sure everywhere, but in Karnataka ये एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पे पहाड़ के ऊपर एक लेक है, and that lake has a mangrove। आपने सुंदरबंस में मैंग्रोव देखा होगा, राइट? यस, वेस्ट बंगाल में। मैंने कर्नाटका जैसे जगह में, जहाँ पे कोई समंदर नहीं है, कुछ भी नहीं है, पहाड़ के ऊपर एक लेक है, और लेक के पास मैंग्रोव है। दैट इज अमेजिंग प्लेस टू गो एंड विजिट। वहां की स्टोरी थोड़ी अलग है, वहां पे लोग दे डू नॉट टॉक अबाउट घोस्ट, दे डू नॉट टॉक अबाउट आत्माएं एंड ऑल दोस थिंग्स। व्हाट दे टॉक अबाउट इज समथिंग सुपरनैचुरल। वो कहते हैं कि वहां के राजा महाराजाओं ने जब वो किला बनाया था तो वो सोना चांदी छुपाने के लिए बनाया था, और उन लोगों ने उसको तिलिस्म से बाध्य किया हुआ है। मतलब उस समय, उस जमाने में तिलिस्म माना जाता था, और तिलिस्म डाल करके जब आप बंद करते हो तो यू कीप सर्टेन गार्ड्स, जैसा आपने इजिप्ट में देखा होगा, हर पिरामिड के बाहर यू हैव दैट स्फिंक्स जो बैठा रहता है उसको गार्ड करने के लिए। सिमिलर थिंग यहाँ पे होता है। इंडिया में ऐसा माना जाता है कि जब आप इस तरह की चीजें करते हो तो आप गार्ड्स रखते हो जो इस खजाने को बचाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। एंड व्हेन यू ट्राई टू एंटर इनटू दैट महल, या आप ऐसा, आप इस मन में ये लेके जाते हो कि मुझे वो खजाना ढूंढना है या उसे चुराना है, इस तरह से आप जब करके जाते हो तो वो गार्ड्स आपके पीछे लग जाते हैं। यही गलती हमसे हुई थी। हम लोग इन्वेस्टिगेट करने गए थे कि देयर इज समथिंग और नॉट, लेकिन मजाक मजाक में, ये हमेशा मजाक में ही होता है, मजाक मजाक में हमारी टीम के मेंबर्स ने बोला कि चलो लेट्स सर्च फॉर खजाना, कुछ मिल गया तो वी विल टेक इट, अमीर हो जाएंगे, मतलब मजाक में ही बात हो रही थी। लेकिन इन सब बातों के बाद जो हमने फेस किया, इट वाज लिटरली, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, हम जब आए हैं उसके बाद तो फर्स्ट 4 days एवरीवन वाज इल, एंड ये एक ऐसा था कि मतलब एक ही साथ सबको फीवर, तभी ना कोविड था ना कुछ था, ये बहुत पहले की बात। हम सब एक साथ बीमार पड़े, सबको एक साथ गला बैठा, सब एक साथ सर्दी खांसी बुखार हुआ, एंड अब जब आप ब्लड टेस्ट कराते हो आपको पता चल जाता है वायरल है कि क्या है, कुछ भी नहीं था, सबने ब्लड टेस्ट कराया। इसके बाद हमें सपने भी जो आते थे एक जैसे आते थे कि यहाँ वापस मत आ। या बिलीव नहीं करोगे, हो सकता है सिचुएशन सबकी अलग हो,
लेकिन हम जितने लोग गए थे उनको जो ड्रीम्स आ रहे थे वो ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड के थे, जो ये बोल रहा था कि इस जगह पे दोबारा मत। और आप बिलीव नहीं करोगे, उस इन्वेस्टिगेशन के बाद वी हैव ट्राइड 5 टाइम्स, 5 बार फेलियर हुआ, हम नहीं जा पाए। कभी आंधी तूफान बारिश हो जाती है, कभी ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है, रोड ब्लॉक हो जाता है, कभी लैंडस्लाइड हो जाती है वहां पे। मतलब जितनी बार वी थिंक कि वी हैव टू गो एंड इन्वेस्टिगेट दैट प्लेस, देयर इज समथिंग और द अदर थिंग दैट स्टॉप्स अस टू गो देयर। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये तो बहुत ये कहाँ पे है? कर्नाटका में? कर्नाटक, बैंगलोर के ग्रेट, बहुत पास है, ज्यादा दूर नहीं। इट्स 150 किलोमीटर्स फ्रॉम बैंगलोर। ग्रेट। It's the name of the place is Chanarayana Durga. Durga means fort. दुर्ग, Durga. या एग्जैक्टली, इन महाराष्ट्र आल्सो दुर्ग मींस कालावंतिन दुर्ग, वैसा फोर्ट Correct. ही करते हैं। नाइस, ग्रेट। सो सीके जी, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आपका यूट्यूब वीडियोस देखे काफी सारे यंग पैरानॉर्मल एंथुसियास्ट बहुत सारे आ गए हैं। बहुत सारे लोग आपको फॉलो करने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इन्वेस्टिगेशंस में हॉन्टेड प्लेसेस को ढूंढ के जाने के, बहुत सारे लोग एक्चुअल में इंटरेस्टेड इन पैरासाइकोलॉजी, दे आर ट्राइंग टू कम इन। आपको क्या लगता है, एक छोटा सा एक एडवाइस उन लोगों के लिए जो अब भी पैरानॉर्मल एंथुसियास्ट है, ये स्केयर कॉन देख के या फिर आप लोग का वर्क देख के इंस्पायर होके जो लोग आ रहे हैं, उनको एक छोटा सा एडवाइस आप क्या दोगे सीके? आप म्यूट हो। थैंक यू। उनको मैं एडवाइस, जनरल एडवाइस ये दूंगा, एंथुसियास्ट होना बहुत अच्छी बात है, एंड दिस विल, शायद उनके लिए ये एक अवेयरनेस है पैरानॉर्मल को जानने की, और जानना भी बहुत अच्छी बात है, बट इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटली अ डिफरेंट थिंग देन बीइंग एंथुसियास्ट, या फिर उसमें रुचि दिखाना, जानना उस चीज को, उससे कंप्लीटली इन्वेस्टिगेशन बहुत कंप्लीटली डिफरेंट है। तो जो कोई इन्वेस्टिगेटर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको मैं एडवाइस, जो मेरा बेसिक एडवाइस है, उनको ये दूंगा कि आप कंप्लीटली इस कोर्स में आए, पहले कोर्स में उस चीज को पहले सीखें, पढ़ें, स्टडी करें। मतलब आप जो कह रहे हो वो एक्चुअल में हो रहा है, और एक्चुअल में हो क्या रहा है, दे आर जस्ट बाइंग K2 मीटर्स, एंड कोई मोशन सेंसर ले लेता है, कोई K2 मीटर ले लेता है, कोई डाउनलोड कर लेता है स्प्रेड बॉक्स को, और निकल जाते हैं जंगल में, खंडरों में निकल जाते हैं, एंड दे डोंट स्टडी, एंड जस्ट सडनली कुछ उनको ईएमएफ का कहीं ऐसे जंप मिलता है, गलती से भी वो उंगली टच हो जाती है K2 मीटर में ना, तो तब भी वो फ्लक्चुएट हो जाता है। वो उसमें भी बोलते हैं कि समथिंग इज देयर, समथिंग इज देयर, यहाँ कुछ है, पक्की बात है, और यहाँ मुझे सच में डर लगा। दे स्टार्ट टॉकिंग टू K2 मीटर। हाउ कैन अ पर्सन टॉक टू K2 मीटर? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि K2 मीटर से कैसे बात कर सकते हो आप। मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि K2 मीटर से आप कैसे बात। हाउ डू अ K2 मीटर टेल्स यू दैट चले जाओ? मतलब कैसे बोल सकता है वो? आपको डरा कैसे रहा है? चलो, कम्युनिकेशन, इट्स अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। हम समझते हैं एज ए इन्वेस्टिगेटर कि हम यस एंड नो में सम अराउंड लाइक हम कोशिश करते हैं, दैट इज अ फॉर्मूला टू टॉक। बट उससे इस तरह से कम्युनिकेट करना कि वो खतरनाक है, या उसने बोला चले जाओ, या वो समथिंग इज डेंजरस, वो मेरे समझ के बाहर है। तो एक आप ना यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, और साथ में पीपल को, जितने लोग देख रहे हैं उनका सडनली वीडियो वायरल भी हो जाता है, क्योंकि वो चीज ही ऐसी दिखाते हैं कि वायरल होना ही है। अगर कैमरा ब्लर हो रहा है तो वीडियो वायरल हो गया। अगर कोई समथिंग मिस्ट क्रॉस करता है, चाहे वो फॉग हो, चाहे वो कुछ भी हो, या उनको अपनी शेडो दिखती है, डिवाइसेस की शेडो दिखती है, वो उसको जनरली घोस्ट करार कर देते हैं बस जनरली। तो मेरा बस मानना, मेरा एडवाइस, सिंपल एडवाइस यही है कि पढ़ो, समझो, स्टडी करो, रिसर्च करो, देन उसके बाद यहाँ पे आओ। मेरे ख्याल से मैंने अपनी पहले इन्वेस्टिगेशन से पहले, बीइंग अ इन्वेस्टिगेटर, और पहले इन्वेस्टिगेशन से पहले मैंने लगभग कम से कम 2-2.5 साल इस टॉपिक को रिसर्च किया। लगभग मतलब कह सकते हो कि मैंने लगभग सारी स्टोरीज पढ़ी, सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को फॉलो किया, इवन सरबा एंड पूजा को फॉलो किया। देयर इज अ नेम फ्रॉम इंडिया, गौरव तिवारी, आई फॉलोड हिम एज वेल, एंड some of the guys like Rocky and Mayur also have done some investigation, and they were quite genuine one.
एंड उनको भी फॉलो किया एंड बहुत सारे शोज को भी फॉलो किया, फिर रिसर्च किया, फिर पढ़ा, फिर रिसर्च किया, पढ़ा। जब सब कुछ ऐसा लगा कि यस आई एम रेडी टू वॉक इन, तब मैं इन्वेस्टिगेशन में एंटर हुआ। एंड जनरली व्हाट आई डू इज कि हाँ, मुझे हर चीज समझनी है कंक्लूजन पे आने से पहले कि यहाँ कुछ है। लाइक सडनली मुझे कुछ दिखता भी है तो वो घोस्ट नहीं है, वो कुछ नहीं है, जो भी चीज है उसको अनडिफाइंड है, तो अनडिफाइंड को घोस्ट बोलने से पहले वी शुड इन्वेस्टिगेट एंड रिसर्च। मतलब मेरी ये एडवाइस है। लोग अभी क्या कर रहे हैं, करंटली लोग यही कर रहे हैं कि K2 मीटर दो तीन आइटम लेके पहुंच जाते हैं और वहां थोड़ा सा हल्ला मचाते हैं और थोड़ी सी मतलब इन्वेस्टिगेट करते हैं, मतलब दिखाते हैं कि इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और बस उसी का हल्ला मचता है, वो वीडियो वायरल होता है, तो उनको ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन दैट इज जस्ट स्प्रेडिंग द रूमर्स और कुछ नहीं है। अभी मैं सबको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। दिस इज लाइक एक सेफ्टी मेजर फ्रॉम द गोस्ट एनकाउंटर्स पैनल, हाउ टू स्टे अवे, और एक छोटा सा एक क्या बोल सकते हैं, एक एडवाइस या फिर एक हेल्पिंग स्टेटमेंट टू हाउ टू स्टे अवे और हाउ टू स्टे सेफ फ्रॉम दिस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और घोस्ट्स और स्पिरिट्स, हाउ टू स्टे अवे और हाउ टू स्टे सेफ फ्रॉम देम। राहुल जी। He is having a mic issue, I think. Rahul, can you hear me? Can you hear me, Rahul? Mic issue. Hello. Yeah, you're back. Yeah, I'm back. There was some issue. आप क्वेश्चन रिपीट कर दो if you have asked me something. Sure. मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितना भी व्यूअर्स है उनको एक हेल्पिंग स्टेटमेंट या फिर एक पीस ऑफ एडवाइस ऑन हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम दिस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और हाउ टू स्टे सेफ फ्रॉम द स्पिरिट्स और घोस्ट्स और whatever they call it, how to steer clear from them. Okay. So जो इंटरेस्ट होती है, जो पैशन होता है, उसको तो आप कभी किसी को भी मना नहीं कर सकते because it is everyone's choice, right? Interest, passion is one thing, लेकिन venturing out without knowing something is totally different. अब आप जैसे बोल सकते हो, बहुत लोगों को होता है, like मैं मेडिकल पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ, people generally Google out their diseases before going to hospital कि मुझे क्या हुआ है, इसमें डॉक्टर कौन सी दवा देंगे, कौन सा ट्रीटमेंट है. They know in and out of that disease when they visit the hospital, right? But problem वहां पे होती है, अब आप ये तो नहीं बोल सकते कि डॉक्टर को विजिट ही मत करो, खुद ही सब ट्रीटमेंट करो. That cannot happen, क्योंकि आपको दवाइयों में भी बहुत सी चीजें होती हैं कि हमें कब क्या देना है और कब क्या नहीं देना है, which can be dangerous, right? Similarly, इस फील्ड में भी ऐसा है. Knowledge is one thing. मैंने गूगल पढ़ लिया, मुझे पता है ये गैजेट्स हैं, ये ऐसे काम करता है, डन. लेकिन अगर आपको बेसिक नॉलेज दो चीजों की नहीं है, फर्स्ट इज मेटाफिजिक्स, सेकंड इज पैरासाइकोलॉजी, दोनों का कॉम्बिनेशन मेक्स अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और अ रिसर्चर. क्योंकि अगर आपको साइकोलॉजिकल पार्ट नहीं पता है एंड जो लॉज लगते हैं, देयर आर लॉज इन दिस फील्ड एज वेल, जिसे हम फिजिक्स जैसे हम पढ़ते थे बचपन में, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मेटाफिजिक्स, जो बियॉन्ड फिजिक्स, जो फिजिक्स में नहीं बताया गया है, वो हमें बताया जाता है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप ले लें, या आप देयर आर मेनी सच थिंग्स जो मेटाफिजिक्स में है which you need to understand. थर्मोडायनामिक्स का लॉ, जीरोथ लॉ, देयर आर मेनी थिंग्स इन दैट. सो इसीलिए जब सारी चीजें आपको पता है, देन यू वेंचर आउट, क्योंकि इस चीजों में ये भी बताया जाता है कि हाउ टू सेफगार्ड योरसेल्फ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब जैसा सीके बता रहे थे कि लोग जंगलों में चले जाते हैं, रात के अंधेरे में निकल जाते हैं. मैं बात नहीं करता एनर्जीज की, लेकिन क्या पता वहां पे शायद कोई डिच हो, आपने नहीं देखा, आप गिर गए, या आपके साथ कोई हादसा हो गया, आप जंगल में गए. बहुत से लोग राजस्थान के कुलधरा में रातों में जाते हैं, वेंचर आउट करते हैं कि मैं भी इन्वेस्टिगेट करूंगा, बट लोग ये भूल जाते हैं कि वहां पे जंगली जानवर आते हैं. सेम चीज बहुत सारे फोर्ट्स के आसपास ये देखा गया है, जो स्पेशली टाइगर रिजर्व्स के पास होते हैं. लोग चले जाते हैं, कोई हादसा हो गया, परिवार वालों को कौन बोलेगा, राइट? तो ये सारी चीजें हैं. तो देयर आर टीम्स इन इंडिया, जैसे पेयर्स एक टीम है, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, लोग इनको फॉलो करें, उनसे सीखें, और हो सके तो उनके साथ टैग अलोंग करें, राइट, फॉर इन्वेस्टिगेशंस. एंड धीरे 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 जब वो सीखेंगे, देन दे कैन डू देयर ओन इन्वेस्टिगेशंस एज वेल.
लेकिन फर्स्ट हमेशा आपको प्रोफेशनल्स के साथ जाना। Yes, very true. Arun ji, your tip or your advice or your helping statement to the viewers कि कैसे ये स्पिरिट से, एंटिटी से, घोस्ट से कैसे हम दूर रहे और हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम a paranormal activity. Okay, like I totally agree with what CK and Rahul said. But first thing, before going anywhere, know about the places. First, question yourself. I'm talking about the people who are just starting and they are passionate towards, okay, when seeing all the investigators, okay, they are talking to someone which is not there. Hmm. When something which doesn't have physical body, they talk communicating with them. People get thrilled. They're like, even I want to do it. Yes. So those people who are starting fresh, first thing is knowledge. Second is discipline. And third is safety. All three are important. You can't, okay, I have a discipline, I have knowledge, I will go. You're missing safety, anything can happen. There are dangerous than what species or ghosts, whatever they people call. There are things which is more dangerous. They can be a dangerous people, they can be wild animals around, they can be anything. The place might not be safe at night. The people who go around night and just shoot some videos and edit them and just say people, okay, there is something, I found something. They have thrill. I've seen such videos and all just to showcase people. Yes, they went just to get the fear out of people and all. They post such kind of videos. But I would like to say, be careful with whatever you do. First, know the things. Next is expertise. You should be expert in whatever you do. From playing the online car game, you can't drive a car. What Yes, you need very is a true. practice. Yes. Get in touch with the professionals. Learn how they deal with the things, how they get prepared, and what is that they follow. We follow certain rules, and what is that those rules we have to follow them. On the first day, we will not get it. We have to spend no, with the professionals around. Go to the live investigation. Learn how they deal with the things. Everything on after everything, then you'll be ready to go on your own investigation. But what is more important is safety. First, know the places, but get ready. You should be ready for all to face all the whatever happens. You should be in that situation where you'll be ready to face anything. जी, yes. So CK जी, आपका piece of advice to the viewers to stay away from the paranormal activities and haunted things. देखो, फर्स्ट थिंग मेरा एडवाइस तो मैं इसको एडवाइस को थोड़ा चेंज करूंगा वर्ड को. मेरा सजेशन होगा कि if you don't know about the paranormal, don't walk in. Just simply मैं कहूँगा don't walk in, because nobody becomes a doctor without learning. True. So जनरली आपको सीधे सीधे आपको सर्जरी नहीं पकड़ा दी जाती कि आप जाके सर्जरी करो. आपको पहले पढ़ाया जाता है. आपको थोड़े प्रैक्टिकल एग्जाम भी करने पड़ते हैं जिसमें कि आपको थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस दिया जाता है. उसके बिना अगर आप वॉकिंग कर, आप सेफ हो ही नहीं. सिंपल सी बात है. चाहे वो वाइल्ड एनिमल्स हो, चाहे वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो. और जनरली ऐसी आइसोलेटेड प्लेसेस पे क्या होता है कि आज का यूथ हमारा इंतजार कर रहा होता है आपका. कुछ नशों में इंतजार कर रहा होता है और कुछ लूटपाट में इंतजार कर रहा होता है. तो ऐसी एक्टिविटी जनरली होती हैं. जिन जगहों पे मैं गया हूँ, मैंने फेस करी है, चाहे वो वाइल्ड एनिमल हो, कुछ भी हो. सो देयर इज नो सेफ्टी. यू शुड एटलीस्ट बी एक्सपीरियंस वन फर्स्ट बाय लर्निंग फ्रॉम द एक्सपर्ट्स. एक्सपर्ट से पहले आप सीखो, लर्न करो, उसके बाद ही आप वॉक इन के बारे में सोचो. सो एडवाइस नहीं, सजेशन कहूंगा कि आप वॉक इन ना समझो अपने आप को सडनली. वीडियोस देख के लाइक आप मत घुसो कहीं पे भी, क्योंकि ये सेफ नहीं है किसी भी एंगल से. और मैं ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें फेस कर चुका हूँ. मैं टैकल कर लेता हूँ. लाइक आई एम अ फिटनेस ट्रेनर, सो आई एम क्वाइट गुड बिल्ड एंड ठीक है, हम कर लेते हैं. और समवेयर एक्सपीरियंस भी काम आता है. और नहीं, वॉक इन करना चाहिए. सिंपल सी बात. मैं सिंपल सी बात कहूँगा. मैं फेवर में ही नहीं हूँ कि मैं कोई एडवाइस दूँ कि आप सेफ ऐसे हो जाओगे, सेफ्टी आपकी ऐसी हो जाएगी, वैसे हो जाएगी. कोई सेफ्टी नहीं है. नहीं जाना चाहिए. मेरा मानना है जब तक आप उसको सीख डालें. वी हैव ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, पेयर्स, जो कि लोगों को अवेयर कर रही है, सिखा रही है. बहुत ही मेरे ख्याल से शायद इससे सस्ता शायद, मतलब एक कंप्यूटर का बेसिक कोर्स ना, वो भी इससे महंगा आता है मेरे ख्याल से. मेरा मानना ये है. अगर आप कॉस्ट की बात करेंगे तो वो इससे महंगा है. हम आपको कोर्स करवा रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, तो इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म तो कोई हो.
तो पहले आप सीखें, उसके बाद आप कुछ सोचें और फिर आप सोचें कि आपको कैसे जाना है, क्या सेफ्टी है, क्योंकि वहाँ जब हम सीखेंगे तो हम बहुत सारी चीजें सिखाएंगे भी और बहुत सारी चीजें बताएंगे भी, तब आप खुद एक्सपीरियंस हो जाओगे इस बारे में। तो उससे पहले मेरा सजेशन है कि ना जाए। जी, so on that note, thank you so much Rahul, thank you so much Arun, and thank you so much CK ये गोस्ट एनकाउंटर पैनल में आने के लिए, क्रिस्टोस में आने के लिए एंड स्केयरकॉन में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन देने के लिए। आपने जितना भी अभी नॉलेज दिया, आई एम श्योर व्यूअर्स को एक अच्छा खासा एनसाइक्लोपीडिया ही मिल गया है पैरासाइकोलॉजी या फिर एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या होता है, उससे पहले उसके बाद में पूरा रिवॉल्विंग द होल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, उनको एक बहुत बड़ा व्यू मिला है। एंड इवन आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू थ्री गाइस, so thank you so much all of you for coming, and I hope you have a great day ahead. I hope you have great investigations and great findings ahead. Thank This you, is thank you, Shiva Mohan, thank you and everyone. Thank you CK bhai, thank you Rahul bhai, thank you Arun. Shiva. thank you. Take Amazing care. having you people. Shiva, amazing job with the Yes. moderating. Thank you everyone for bringing this information and making out time for ScareCon Crisscross. It was amazing having you. Maybe next time you all will be in Mumbai for another big panel. Sure. And yeah, that's the plan. That's the plan. Thank you everyone. Have a very happy Halloween and enjoy the rest of the day. Bye bye. Happy Thank you, Halloween. Shiva. Same to you. Thank you all. Thank you. Happy Halloween advance. Bye bye. Bye.